Hello everybody, I'm Anu Arora from the English Zone Institute. Today I'm going to discuss a very important information with you. We'll discuss about 30 useful phrases for writing. मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि राइटिंग में हम लोग ऐसा क्या ऐड करें, हमें वोकैबुलरी स्ट्रांग रखनी है या फ्रेजेस ऐड करने हैं, इडियम्स लिखनी है कि नहीं लिखनी है, अगर इडियम्स लिखनी है तो कौन सी इडियम्स लिखनी है। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग वो बहुत कंफ्यूज है कि कौन से वर्ड्स ऐड करें जिनके उनके अच्छे बैंड्स आए। तो गाइज आई हैव मेड अ वीडियो फॉर यू जिसमें आपको 30 यूजफुल फ्रेजेस जो है राइटिंग की वो बताई जाएंगी, कहाँ पर आपको यूज करना है वो भी सामने बताया जाएगा एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स आर आल्सो देयर। उसके बाद फिर हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें आपको अपने सेंटेंसेस जो हैं वो बताने हैं एंड देन वी विल चेक इट एंड वी विल लेट यू नो दैट वेयर योर मिस्टेक्स आर देयर। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे आप ये सेंटेंस देख रहे हो, इन दिस सेंटेंस आई एम गोइंग टू गिव यू विद द वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर राइटिंग अ गुड essay along with examples of how to use them. For example, if I say to you this thing, मैं आपको ये कहती हूँ कि I'm going to give you with the words and phrases for writing a good essay along with examples of how to use them. इसके बजाय मैंने थोड़े से वर्ड्स को चेंज किया। I'm saying to you, I'm going to equip you, equip at the place of give, with the words and phrases for writing a good. At the place of good, you can use top notch essay along with examples of how to utilize them. So utilize word we can use at the place of use. Here we have learned three words: equip, top notch and utilize. Let's start with the video now. So first of all, we'll do what words or what phrases we can use for presenting a view. So guys, basically there are three phrases which we can use for presenting a view. The first one, it's widely accepted that. Second one, it's generally claimed that. Third one, it's generally accepted that. एक चीज आपको याद रखनी है, जो भी ये phrases हैं जो first slide पे आपको show होंगी, these all phrases you can use in the introduction part. जब आप introduction की starting करते हो, in the beginning of the introduction, you can use these lines. For example, it's generally accepted that human activities interfere natural process. एक तो हो गया ये way. Which is the second way? These are the next phrases. A common opinion is that, or a popular belief is that. अगर आप ऊपर वाले थ्री फ्रेजेस नहीं यूज करना चाहते हो या फिर आपने एक बार यूज कर ली है एंड देन यू आर लुकिंग फॉर सम अदर ऑप्शन, बिकॉज ऑब्वियसली repetition isn't allowed in IELTS. So then you can say, for example, a common belief is that human activities interfere the natural process. Then we have another option. Dash is generally considered to be dash or dash is generally thought to be dash. फर्स्ट वे भी यूज कर लिया, सेकेंड वे भी यूज कर लिया, थर्ड वे को आप यूज कर सकते हो. इन विच वे? फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन एक्टिविटीज आर जनरली कंसिडर्ड टू बी एन इंटरफेरेंस इन नेचुरल प्रोसेस. ऊपर वाले सेंटेंस को ही मैंने एक पैराफ्रेजिंग के फॉर्म में रिटन कर दिया. So these are the three ways in which way you can present a view. Now let's move to the next slide. Presenting listing. जो हमने लिस्टिंग देनी है, लिस्टिंग किस तरीके से देनी है? लिस्टिंग मीन्स सीक्वेंस, फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आइडिया दिया, फर्स्टली इंटरनेशनल टूरिज्म रेजेस अ कंट्रीज इकोनॉमी. Secondly, it explores human knowledge about various cultures. Finally, traveling abroad is more enjoyable than visiting local places. So these are the ways where we can present listing. For example, हमें causes पूछे हुए हैं या हमें factors पूछे हैं या किसी चीज के reasons पूछे हैं. Firstly, this reason. Secondly, this reason. Thirdly, this reason.
At the place of thirdly, we can use a word finally as well. या फिर last but not least, वो भी आप use कर सकते हो. Now, the phrases for the presenting arguments. Arguments means हम लोग बहस कर रहे हैं. एक तरफ हमने एक आइडिया बताया और बाद में उस आइडिया को हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया, उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं. ये जनरली उन एसेस में आता है जिसमें हमें 50-50 की साइड पूछी होती है. फॉर एग्जाम्पल, डिस्कस दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, या फिर डिस्कस बोथ व्यूज, जिसमें हमने दोनों साइड डिस्कस करनी है. उसमें हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में, बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखेंगे? ऑन द वन हैंड, और बॉडी पैराग्राफ 2 में हम लोग मेंशन करेंगे ऑन द अदर हैंड. लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल. ऑन द वन हैंड, ट्रैवलिंग बाय कार्स ब्रिंग्स द कंफर्ट. फिर उसको एक्सप्लेन किया, एग्जांपल दी. देन बॉडी पैराग्राफ 2 में, ऑन द अदर हैंड, कार्स कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन. तो एक तरफ हमने कार्स का पॉजिटिव पार्ट बताया कि ये हमारे लिए कंफर्ट जो है, इट ब्रिंग्स द कंफर्ट फॉर अस, और सेकेंडली हमने उसके अगेंस्ट बताया दैट इट कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. एक्सप्लेनिंग योर आइडियाज. अपने आइडियाज को आपने किस तरीके से प्रेजेंट करना है? टू पुट इन अनदर वे, या फिर इन अदर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, cars contribute to the air pollution. Full stop. पहले आइडिया को हमने स्टेट किया, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया. इन अदर वर्ड्स, emissions from cars contaminate air in high amount. Contaminate means pollute. सेकेंड यूसेज देखते हैं, टू पुट इट इन अनदर वे की. Poverty is a prime cause of crime. फर्स्ट लाइन में, बॉडी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में हमने उसका टाइटल बताया कि पॉवर्टी जो है दैट इज द प्राइम कॉज और दैट इज द मेन कॉज ऑफ क्राइम. ओके, व्हाई इट इज द मेन कॉज ऑफ क्राइम, दैट वी विल आंसर इन द सेकेंड लाइन. टू पुट इट इन अनदर वे, हैविंग लैक ऑफ सोर्सेस एंड बीइंग अनेबल टू रन लाइवलीहुड फोर्स अ पर्सन टू इंडल्ज इन इलीगल एक्टिविटीज. मीन्स अगर किसी पर्सन के पास सोर्सेस की अनअवेलेबिलिटी होती है, या फिर सोर्सेस जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते, या सोर्सेस की कमी होती है, लैक मीन्स कमी, एंड बीइंग अनेबल टू रन लाइवलीहुड, और वो पर्सन अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता, तो ये चीजें जो हैं वो पर्सन को फोर्स करती हैं इलीगल एक्टिविटीज में इंडल्ज होने के लिए, या फिर ये पर्सन को फोर्स करती हैं इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए, उसको मजबूर कर देती हैं. तो इस तरीके से हम लोग अपने आइडियाज को एक्सप्लेन कर सकते हैं by to put in another way, या फिर in other words. There are two phrases that we can use. Now let's move to the next slide. Giving examples. Example हमने किस तरीके से देनी है? For example, for instance, cars contribute to the air pollution. For example, in Delhi, capital of India, level of pollution has touched to its peak due to the over reliance on cars. तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो एक्सप्लेन की हमने कि दिल्ली में जैसे जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था. क्यों? क्योंकि कार्स के ऊपर जो लोग हैं वो ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं. या फिर या तो आप ये फ्रेज यूज करो, फॉर एग्जाम्पल और फॉर इंस्टेंस, अदरवाइज यू हैव अदर ऑप्शन. अ गुड इलस्ट्रेशन ऑफ दिस इज, for example, cars contribute to the air pollution. A good illustration of this is Delhi, capital of India, where the pollution level has touched to its peak due to the over reliance on cars. Sentence बिल्कुल सेम है, बस रिप्लेसमेंट की मैंने फॉर एग्जाम्पल की a good illustration of this के साथ. उसके बाद we have other option as well. This is shown or illustrated by. Again, same example. Cars contribute to the air pollution. This is shown by a city such as Delhi, where the pollution level has touched its peak due to the over-reliance on cars. So we have three ways. In three ways we can give the example. The first one is for example. The second one, a good illustration of this is, or the third way, this is shown by. Next one, adding information. जब हम लोगों ने information जो है वो add करनी हो किसी में, then we can use the connectors. Moreover, furthermore, in addition to this, या फिर additionally. For example,
Regular exercise leads to physical wellness. Moreover, it is widely accepted that it contributes to psychological well-being too. मतलब ये हमारी फिजिकल वेलनेस में तो हेल्प करती है और साथ में हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी है. One word is moreover that we have used. Otherwise, we have other option to use likewise or similarly. Women were likely to participate in sports. Similarly, mostly all boys were interested to spend time in sports. Women तो interested थी और साथ ही साथ similarly उसी तरीके से जो boys थे वो भी interested थे sports में time spend करने के लिए. So whenever you want to add information, these 6 words are there that we can use. We have the variety of words, but these are just an example to tell you. Then about showing importance. किसी point को या किसी word को जब हम लोग highlight करना चाहते हैं, then these 3 words are there that we can use. For example, the first one is significantly. These initiatives will significantly improve the situation. Significantly means very fast or will surely, किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो. जो ये initiatives हैं, जो ये steps हैं, वो सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेंगे. नोटेबली मतलब जैसे अगर हमने जब हाईलाइट करना है, फॉर एग्जाम्पल राइडिंग अ बाइसिकल ब्रिंग्स एम्पल बेनिफिट्स, मोस्ट नोटेबली इट्स इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ. जो बाइसिकल है, बाइसिकल चलाने के वैसे तो बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन जो खासकर सबसे ज्यादा फायदा होता है या सबसे ज्यादा फायदे होते हैं हेल्थ के ऊपर. तो उसके लिए हम लोगों ने हाईलाइट करने के लिए क्या वर्ड यूज किया? Most notably. The third word which we have, it's importantly. Most importantly, there must be a blanket ban on smoking. Blanket ban means strict ban. सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग पे ब्लैंकेट बैन होना चाहिए, मतलब स्ट्रिक्ट बैन होना चाहिए. So these 3 words are there that you can use for the showing importance. The next one we have, it's express your opinion. When you want to tell about your own opinion, then you can use these phrases. I'm convinced, I totally agree, or I would agree that. For example, I would agree that benefits of tourism outweigh the drawbacks. I totally agree that putting a blanket ban on drugs would be helpful to reduce the chances of crime. Means मैं पूरी तरह से इस बात से agree हूँ कि अगर blanket ban drugs पे लगाया जाता है, it would be very helpful. ये चीज बहुत जरूरी होगी crime के chances को या crime को कम करने के लिए. ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है और it would be very helpful, it would be very useful. I would agree that media is taking much interest in the lives of celebrities. So these 3 phrases are there जो हम लोग अपना opinion express करने के लिए use कर सकते हैं. Next one, presenting facts. अगर हमने कोई actual बात को explain करना हो, कोई fact को explain करना हो, then the fact is that, it is obvious that, it is clear that, yeah, there is no doubt that. Example, there is no doubt that evolution and technology has bestowed great benefits to humanity. Bestowed means offered, provided. जो evolution हुई है technology में, उसने हमें बहुत सारे benefits दिए हैं. It's obvious that merits of surfing internet outweigh the drawbacks. या फिर it's clear that indulging in vicious habits leads to adverse ramifications. Indulging in vicious habits, vicious means bad habits. अगर हम लोग bad habits में involve होते हैं, then it leads to adverse. Adverse means bad. Ramifications means effects. तो उसके बहुत बुरे प्रभाव पड़ेंगे. So guys, this is the end of today's video. This is the end of today's session. I would recommend you to use these phrases. जो आपने phrases use की हैं, जो आपने आज सीखी हैं, use these phrases in your essays. And one thing more you can do is you can make the sentences and you can drop these sentences in the comment section. जहां पे भी आप गलती करते हो, we are here to guide you, right? और अगर आपको कोई चीज या कोई भी concept नहीं clear है, you can tell me in the comment section. Otherwise, we numbers are also there in the description box.
यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहां पे भी आप नंबर्स देके भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो. So this is the end of the today's session. Have a good day. Stay home. Stay safe. Goodbye, everybody.